So is it visible? Is the screen is visible properly here? Yes, sir. Okay. So Ctet June batch. In this particular class, we will discuss about the strategy. Our strategy will discuss. See, first we will see this whole session will be divided into two parts. Okay. Whatever we will discuss, okay, this entire journey till your seated examination will be will be divided into two parts. Okay, हम इसको दो parts में divide करेंगे. The first part will be 90 days crash course. Okay, in 90 days we will do everything. Okay, then again we will restart or revise all the things. Okay. ओके सो एंटायर जर्नी जितना भी हमको पढ़ना है जून 25 एग्जाम तक दो पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे फर्स्ट इट विल बी 90 days crash course means in 90 days or in 3 months we will cover the entire syllabus and after that the remaining days okay after that the remaining time for example it is February so February March April okay till April we will complete और May 15 तक हम कवर कर लेंगे तो after that 1 month or 1.5 month one or 1.5 month will be our revision plus a discussion. इसके बाद मतलब 90 days के बाद मतलब 3 महीना के बाद ये 3 month है आफ्टर 3 month the remaining time 1 or 1.5 month जितना भी हमारे पास टाइम होगा in that particular time period we'll revise everything and discuss a lot of doubt and do a lot of questions. Okay, this will be our strategy. So let us see what are the things that we'll get in this particular course. Okay, so you'll get daily life classes till exam date. In this, like daily classes are there, but now for this 90 days, okay, up to March at least, classes will be for 5 days a week. Extra classes may be there. Okay, some week you will get extra classes. So you will get 5 days classes plus 2 practice days. Okay, 2 days will be for practice session. You may get like doubt clearing session also. Okay, 5 classes will be there and 2 doubt like or practice session will be there. So in that you will do self practice. So ये जो 5 आपका class होगा 5 आपका subject आता है that I will tell you now. 5 subject 5 class क्या होगा और 2 आपका जो होगा that will be your self practice time और self practice days. Apart from that self practice के साथ साथ आपका कुछ कुछ doubt session भी होगा. Okay, all subjects will be covered, PDF notes will be provided, online tests will be available, live doubt clearing sessions will be there in this particular 2 days. Okay, कभी कभी लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा 24/7 डाउट क्लियरिंग ग्रुप will be available. You can discuss among each other any time, any day. Okay, individual guidance will be there and career counseling and many more because we are doing like giving classes to like a small group of students. Okay, and you know that we have our lifetime badge also. The price of the lifetime badge is 5,000 rupees. In that badge, if someone has joined lifetime batch then the classes will continue. Okay, for example if you clear this exam अगर आपका CTET क्लियर हो जाता है तो CTET क्लियर करने के बाद फिर हम जो है अभी हमारा प्लानिंग है कि KVS का जो है भी बैच हम लोग स्टार्ट करेंगे तो वो भी आप एक्सेस कर सकते हो टिल यू गेट द सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब. वो क्लासेस चलेगा लाइफ टाइम बैच मीन्स टिल यू गेट द जॉब यू कैन अटेंड जितने भी बैच चलेगा उसके बाद KVS का होता है NVS का होता है कोई भी लाइक गवर्नमेंट जॉब का बैच होता है वो आप एक्सेस कर सकते हो. तो सम स्टूडेंट्स आर देयर जिन्होंने लाइफ टाइम बैच ज्वाइन किया है और सम स्टूडेंट जिन्होंने सिर्फ सीटेट का बैच ज्वाइन किया है तो 1500 आपने पे किया होगा फॉर द सीटेट क्लासेस तो आप सीटेट तक जो है आपका क्लासेस होगा बट आफ्टर दैट आल्सो यू कैन ज्वाइन द लाइफ टाइम बैच. ओके, नाउ लेट अस कम टू द सिलेबस कोर्स स्ट्रक्चर एंड फुल स्ट्रेटेजी वो जो हम अभी 90 डेज के अंदर पहले करने वाले हैं. ओके, नाउ हमने थोड़ा सा लाइक प्लानिंग लाइक हमने थोड़ा फ्लेक्सिबल प्लानिंग है बट हमने स्ट्रक्चर थोड़ा टाइट किया हुआ है. सो यू विल गेट like around 8 classes in CDP first. After that, in CDP first unit, that is child development, that is elementary school. Okay, in this particular unit, okay, see in CDP, let me first tell you 5 subject. आपके क्या क्या 5 subject हैं. तो सबसे पहला सब्जेक्ट जो है वो आपका है CDP चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी एंड ऑल स्टूडेंट्स यू विल अपीयर फॉर सीटेट पेपर 2. ठीक है, जितने भी लोगों ने आप सब लोगों ने डेफिनेटली B.Ed किया होगा तो आप लोग पेपर 2 के लिए एलिजिबल होंगे, पेपर 2 का एग्जाम देंगे. तो इन पेपर 2 यू विल हैव 5 सब्जेक्ट. 1 is CDP, then 2 language subject will be there. Preferably everyone will take one language as English, that is easy as compared to other language. So one will be your language subject English. Second,
I suggest Hindi, it will be better, but you can take any other language also. We will provide here Hindi. Okay, हमारे यहाँ पे आपको हिंदी provide किया जाएगा. So after that you will have math. For science it will be different. For science, math will be there, and math and science will be there. For social science you will have social science pedagogy and social science. So let me show you the syllabus. Math and science will be one unit. Okay, so in that you will get the 30 questions, 60 questions, right? See, in for science students, see, for arts and science both, these three are common. ये common है, ठीक है. ये आपका जो CDP रहेगा, आपका language 1 रहेगा और आपका language 2 रहेगा, ये आपका common रहेगा, right? This three will be common. Then maths and science will be for the science students, and social science में आपका social studies रहेगा, ठीक. Social science will be there in for arts, social science. SST जिसको हम बोलते हैं, social studies, ठीक है. These are the 5 subjects. So here you will get 30 question from CDP. You will get 30 question from English. You will get 30 question from the second language or Hindi, for example, if you are taking. You will get 30 question from maths and 30 question from science. So as a science student, you will get total 150 questions. And if you are a social science student, then you will get 60 questions from social science, and the sum total will be again 150. So total 150 questions will be there, and 150 marks will be there. Each question will carry 1 mark. Okay, 150 questions, each question will carry 1 mark. So total will be 150 marks. Okay, आपका total 150 marks का जो है exam होगा. Clear? Now, first, if you see the teaching, CDP, I will deal CDP part. मैं आप सब definitely मुझे जानते हो, I'm Jogeswar Sahu. So I take the classes of CDP. आपको मैं RI के टाइम मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाया था, तो I will do teaching aptitude and CDP part. So teaching aptitude included inside the CDP, right? And in CDP you will get 3 units. CDP जो आपका टॉपिक है उसमें आपको 3 यूनिट मिलेगा. One is child development, about elementary school child you will get. Okay, then in the second unit you will be inclusive education and understanding the children's special need. मतलब जो PWD बच्चे होते हैं उनके बारे में जानना है और उनको कैसे इंक्लूड करना है. What is the phenomena or concept of inclusive education, that you will get. Then third is learning and pedagogy. How to teach. Pedagogy means how to teach the students, what problem they face. All those things will be there in the third unit, okay, of CDP. CDP contains 3 units. In the first unit you will get 15 questions from the CDP. Actual CDP के अंदर भी 3 भाग है, तो from the CDP portion you will get 15 question. ठीक है, आपको CDP portion में 15 question मिलेगा. Okay, then from the inclusive education you will get 5 questions. From learning and pedagogy you will get 10 questions. Okay, now let us move to the second thing, that is language. Okay, language. So language, the syllabus you can see, language comprehension, reading like unseen passage, and whatever you have read in the RI syllabus, that will come. Okay, so 30 questions will be from language, and out of that you will get 15 questions from pedagogy of language development and 15 questions from the core language or grammar. For example, ग्रामर से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और कैसे ग्रामर पढ़ाओगे, लैंग्वेज कैसे पढ़ाओगे, उससे 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा. सिमिलरली लैंग्वेज 2 में भी सेम है, आपका 15 क्वेश्चन आपका जो है पैसेज से पूछा जाएगा, और 15 क्वेश्चन आपका जो है पेडागोजी से पूछा जाएगा. कैसे आप हिंदी पढ़ाओगे फॉर एग्जांपल, ये इस तरह से पूछा जाएगा. ठीक है, तो 15 क्वेश्चन पूरा यहाँ पे पैसेज से होगा. ऑल 15 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम पैसेज. लैंग्वेज में कोई ग्रामेटिकल डायरेक्ट ग्रामर से नहीं पूछेगा, पैसेज के अंदर का ग्रामर आपको पूछेगा. यू विल गेट 15 क्वेश्चन फ्रॉम passage and 15 questions from the pedagogy of language development in each language subject. So 3 subject का हमने discuss कर लिया. From language, from CDP you will get 30 questions. Okay, from CDP is divided into 3 parts. From part 1 you will get questions from child development, elementary school. You will get 15 questions from the child development. Okay, you will get 5 questions from inclusive education and 10 questions from learning and pedagogy. Okay, after that you will get 15 questions from both languages. Okay, from language 1 you will get 15 questions from passage, and from language 2 also you will get 15 questions from passage, and from pedagogy of language development, again you will get 15 questions each from both the languages. So here 90 questions will be from CDP and language. After that the 60 question will be from, these 90 questions will be common.
After that, the 60 questions will be different for science student and art students. Okay, different from both. So for science student, you will have maths and science. Okay, so out of 60 questions, there will be 30 questions from mathematics and 30 questions from science. And out of 30 questions from each, from maths, out of 30 questions, 20 questions will be from content part. Directly you will get content like number system, algebra, geometry, and 10 questions will be from pedagogy. Similarly, for science also, 20 questions from content and 10 questions from pedagogy. Clear? This is for the science student. For art student or social science student, you will get 60 questions, sum total 60 questions you will get in your like social science paper. And out of that, 40 questions will be from content and 20 questions will be from pedagogy. Out of the 40 questions, history will contain like around 10 questions from history. And see, it is not actually clearly written actually. Maybe 10-15 questions you will get from history, and you will get maybe 10 questions from geography, and again around 10-15 questions from social. Total you will get 40 questions from history, geography, and civics. So this is called civics or social and political life. After that, you will get 20 questions from pedagogy. So which part is most important for सीटेट? अगर आप सीटेट का देखोगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि इन सीटेट पेपर यू विल गेट टोटल 5 सब्जेक्ट एज ए बीएड स्टूडेंट. आप सब बीएड स्टूडेंट हो, मतलब आप इंटीग्रेटेड बीएड कर रहे हो. ठीक है, अगर आप इंटीग्रेटेड बीएड कर रहे हो या फिर आप जो है 2 ईयर बीएड कर रहे हो, तो आफ्टर बीएड आप जो है पेपर 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हो. तो आपको सिर्फ पेपर 2 का एग्जाम देना है, पेपर 1 का एग्जाम नहीं देना है. इन पेपर 2 विल गेट 5 सब्जेक्ट. आउट ऑफ दोस 5 सब्जेक्ट, CDP will be the first subject. Then you will get 2 language, language 1, language 2. After that, this is common. These 3 are common. Okay. After that, you will get maths and science for science student, and for social science for art student. This is different. Okay. This 3 यहाँ पे भी ये है, यहाँ पे भी है. Okay. So 90 questions आपको common रहेगा और बाकी 60 क्वेश्चन मैथ साइंस या 60 क्वेश्चन सोशल साइंस. दिस इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ. तो देखो, ये जो आपको मैंने यहाँ पे डिफरेंट बताया, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो सीडीपी में टोटल ये तीनों जो 30 क्वेश्चन सीडीपी में आते हैं, आउट ऑफ दोज इसमें जो मेन चाइल्ड डेवलपमेंट पार्ट है उसमें से 15 क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, 3 यूनिट है ए बी सी करके. ठीक है, ए बी सी 3 यूनिट है. सेकंड इंक्लूसिव एजुकेशन है और तीसरा जो है पेडागोजी. So this third unit is your pedagogy. So from CDP there will be pedagogy, common pedagogy. Again from language 1, for example you are taking English, you will get 30 questions. आपको 30 questions मिलता है यहाँ से भी. तो इस 30 questions में आपका जो है 20 क्वेश्चन रहता, सॉरी 15 क्वेश्चन रहता है. ये भी पार्ट ए पार्ट बी में डिवाइडेड है. 15 क्वेश्चन जो है तुम्हारा पैसेज से रहेगा, 15 क्वेश्चन पैसेज से रहेगा और 15 क्वेश्चन तुम्हारा क्या रहेगा, पेडागोजी. ठीक है, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट. अगेन लैंग्वेज 2 का अगर हम बात करेंगे, फॉर एग्जांपल यू आर टेकिंग हिंदी, देन यू विल अगेन गेट 30 क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट आल्सो. ओके, एंड आउट ऑफ दोस 30 क्वेश्चन, again here it is also divided into 2 part. Part A 15 question passage, okay, and 15 question pedagogy. Okay, 15 question pedagogy. Now if you come to the like your science or social science, means core part, I am telling. Core means your, for example it is math and science for science student and social science for art student. So here you will get 60 question total. ठीक है, 60 question total. इसमें भी 60, इसमें भी 60. So out of the 60 question, here also 20, here also it is divided कि from math and science it is also divided into 2 part. मैथ में 20 क्वेश्चन कोर है और साइंस में 20 क्वेश्चन कोर है. तो टोटल 40 क्वेश्चन आपका कोर पार्ट कंटेंट पार्ट से रहेगा. ठीक है, मैथ से 20 और साइंस से 20. 40 क्वेश्चन आपका कंटेंट से रहेगा और 20 क्वेश्चन आपका पेडागोजी से रहेगा. तो अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है सीडीपी में, तो वो कौन सा पार्ट है बताओ? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा पार्ट है, मतलब कहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बताओ आप लोग. सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं?
एनीवन? देखो माइक ऑन करके बात करो, दिस इज लाइव क्लास, ओके। आई नीड लाइव इंटरेक्शन, अदरवाइज हम रिकॉर्डेड, अगर वीडियो आपको ग्रुप में दे देंगे, आप रिकॉर्डेड देखना, ठीक है। लाइव करना है तो आपको बात करना पड़ेगा, यू हैव टू आंसर मी, ठीक है, आस्क मी क्वेश्चंस आल्सो। यस जया, आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. So which part contains more number of questions? Definitely pedagogy. Okay. You will get pedagogy from CDP, you will get pedagogy from language, both language, and you will also get pedagogy from the your subject content. So total, if you see, you are getting here 10, 30, and 50. Okay. You are getting only out of 160, 50 questions are from pedagogy only. आपको जो 50 क्वेश्चन सिर्फ पेडागोजी से मिल रहा है, सॉरी 60 क्वेश्चंस, राइट, 30, हाँ 60 क्वेश्चन। तो पूरा अगर आप देखोगे ऐसे, यू आर गेटिंग 60 क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट पेडागोजी, you are getting 60 questions from different pedagogy, and that's why out of 160, out of 160, 60 क्वेश्चन पेडागोजी से हैं। पेडागोजी का मतलब होता है टीचिंग, हाउ टू टीच, ओके, लाइक टीचिंग मेथड्स क्या क्या होता है वो उसके बारे में है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस यही प्ले करता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा टाइम आपको इस चीज में देना है, बिकॉज कंटेंट इजी रहता है, बट स्टिल कंटेंट को भी इग्नोर नहीं करना है। तो हमारा जो प्लानिंग होगा, यू विल गेट 60 क्लासेस फॉर थ्योरी एंड एमसीक्यू डिस्कशन from teacher's perspective, and for student perspective means you will ask a lot of questions in the individual doubt clearing classes। 60 क्लासेस जो है हम आपको पढ़ाएंगे, क्लास में भी, लाइव क्लास में भी लाइव डिस्कशन होगा, ठीक है, लाइव डाउट डिस्कशन भी होगा क्लासेस के टाइम में, ठीक है, लाइव डाउट डिस्कशन भी होगा, मतलब आप क्लास के दौरान अपना डाउट्स पूछ सकते हो इन द 60 क्लासेस। बिगिनिंग दो पार्ट, जैसे मैंने बोला आपको, एंटायर कोर्स को हमने, एंटायर जो कोर्स है जून 2025 का जो बैच है, इस कोर्स इज डिवाइडेड टू टू पार्ट। Part A is your crash course. Okay, second part is your revision batch, revision course. ठीक है, तो पहला जो क्रैश कोर्स होगा 90 डेज का होगा, रिवीजन रिमेनिंग डेज, रिमेनिंग जितना आपका डे रहेगा उतना होगा आपका। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर गेटिंग 40 डेज, 50 डेज, वट एवर, जितना भी आपको टाइम मिलता है जून तक, तो रिमेनिंग आपका रिवीजन होगा। तो 90 डेज में से 60 डेज जो है हम आपको पढ़ाएंगे कंटेंट, ओके, क्लासेस होगा, मतलब को जिसको बोलते हैं मेन क्लासेस होगा, ठीक है। और आपका 15 डेज आपका जो है डाउट क्लासेस होगा, डाउट क्लासेस। और 15 डेज जो है हम मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, फुल लेंथ टेस्ट एंड डिस्कशन, मॉक टेस्ट एंड उसका डिस्कशन होगा। ये होगा 90 क्लासेस का ब्रेकअप। उसके बाद अगेन वही सब चीजें फिर से पढ़ेंगे, तो बिकॉज सीटेड में आपका जो है सिलेबस ज्यादा ज्यादा नहीं है, लिमिटेड सिलेबस है, बट क्वेश्चन जो है आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिकॉज लाइक ऑल दो सिलेबस लुक्स लिमिटेड, बट पेडागोजी में बहुत वास्ट टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। सो यू हैव टू फोकस मोर ऑन पेडागोजी स्पेशली, ओके। पेडागोजी के क्लासेस को आपको मिस नहीं करना चाहिए, डेफिनेटली लाइव आपको अटेंड करना चाहिए, राइट।